So, hello students, very good evening. Today we are going to start with our remaining topics of our Unit 3 for the subject Accounting for Managerial Decision. Now we are going to discuss about the budgetary control. Now, what is budgetary control, students? Budgetary control is nothing but a process of planning, monitoring, controlling the organization's financial resources. That is through the use of budgets that we prepare. जैसे हम बजट बनाते हैं उसी तरह से बजट को कंट्रोल करोगे तो उसे हम बजटरी कंट्रोल कहते हैं. It involves where you compare your actual performance with the budgeted figures so that you can identify the variances, take corrective actions to ensure that the organization objectives are achieved. Okay. Am I audible properly? Everyone, am I audible? Okay, so I think Sharma ji, there is a network problem from your end. And Arka Parva, what are you asking about sales mix variance? When did we did this? ये तो हमने किया ही नहीं है. ये आप कौन से टॉपिक की बात कर रहे हो? We are into the unit 3 budgeting. You're talking something wrong. So, every organization, when you talk about budgets, it is very crucial for them. So, no organization planning can be successful, students, without having efficient, effective system of control. So, budgeting is very closely linked with control. Budgetary control serves as a link which uses a source of planning and controlling. Okay. So the implementation of control that you do in the organization with the help of budget is your budgetary control. Okay. Steps, what are the steps that you follow for budgetary control? First is budget planning. Yes, obviously, here you have to set the financial goals, create a budget for the organization. Okay. So the budget will involve what, students? Revenue forecasting, expense का estimation करना कितना खर्चा होगा, cash flow के projections करना for that particular period of time. So that is you're preparing a budget. जब आपने बजट को प्लान कर लिया उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, राइट? सो वंस द बजट इज अप्रूव्ड, it is put into action. The responsibilities, targets are assigned to various departments within the organization. The resources are allocated based on the budgeted amounts which are decided. Planning is what? आप जो प्लान कर रहे हो, that is planning. आपने already plan किया है, I want to spend 20,000 rupees. That is what? Planning. Monitoring and measurement. Regular monitoring of financial performance is very essential to determine if the actual results align with your budgeted figures, right?
सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमने बजट बनाया है वो एक्चुअल फिगर्स के साथ मैच हो रहा है, वो हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। तो वो आप कैसे कर सकते हो? बाय मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट। वेरिएंस एनालिसिस, कोई भी डिफरेंसेस अगर आपको एक्चुअल रिजल्ट्स एंड बजटेड फिगर्स में मिलता है, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। अगर आपका पॉजिटिव वेरिएंस है दैट इज फेवरेबल, अगर आपका नेगेटिव वेरिएंस है दैट इज अनफेवरेबल। तो अगर नेगेटिव है देन यू नीड टू इन्वेस्टिगेट द रीजन, किस वजह से आपका डिफरेंस आया है बजट में। करेक्टिव एक्शन, जब आपको पता चल जाएगा रीजन व्हाट्स द डिफरेंस, व्हाई इज द वेरिएशन, उस टाइम पे आप क्या करोगे? मैनेजमेंट विल टेक करेक्टिव एक्शंस टू एड्रेस दोज डिविएशंस। लाइक वो एडजस्ट करेंगे स्पेंडिंग्स को, रीएलोकेट करेंगे रिसोर्सेस, रिवाइज करेंगे सेल्स स्ट्रैटेजीज, दे विल आल्सो इम्प्लीमेंट कॉस्ट सेविंग मेजर्स। ओके, and lastly after taking the steps, corrective actions, they will report it. Report means it is a very important part in your budgetary control. You will include that factual financial results, comparison of budgeted amounts in the reports. Now, this report will help the stakeholders, that is your management, your board of members, your investors, to assess the financial health of the organization. Okay. Students, I think you all should stop the chatting. Otherwise, I will disable the chat option. If it is related with the topic, then only ask me. Otherwise, else you can discuss it at the end. रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्टिंग इज रिपोर्ट बनाना। अगर आपने जो भी चीज ऑब्जर्व की है, अगर उसको अभी आप जो सेशन सुन रहे हो वो आप कहीं पे नोट डाउन कर रहे होगे पॉइंट्स, सो व्हाट इज दैट? रिपोर्टिंग। सो व्हेन यू आर फॉलोइंग द स्टेप्स ऑफ बजटिंग, यू प्रिपेयर अ रिपोर्ट सो दैट आपके जो स्टेक होल्डर्स है, मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको पता चले कि व्हाट आर दी financial position of the company, what decisions they need to take. Okay. Benefits of budgetary control. Now, what are the benefits of budgetary control? First is planning and goal setting. So if you see, it's similar only, nothing different, only terminologies changes. Planning and goal setting, that means it enables organization students to set realistic financial goals, plan resource allocation accordingly. परफॉर्मेंस इवोल्यूशन आप कर सकते हो, आप कंपेयर कर सकते हो व्हाट इज योर एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ द बजट। Organization can evaluate their performance, identify the areas where the improvements are required. Resource allocation, budgetary control also helps to allocate resource effectively. That means you will come to know what are the organization priorities, whether आप organization priority के साथ fulfill हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। Cost control, I think host you can disable the chat box. The students are continuously messaging. Students, if you have joined the session late, you can go and watch the recording because it is not possible for repeating the slides again. We have already crossed 10 minutes. So it's not possible to again go on the same slide and repeat the 10-minute session because we have to complete it.
So host, you can disable the chats now. Yes, ma'am, done. Thank you so much, because others are getting distracted and they are posting it in the chat box. I don't know what is the problem with this class. Every time I have to come and scold in the starting and then they quietly listen the session. Is it like आप छोटे बच्चे हो क्या आप लोग? हर सेशन में मुझे आई डोंट रिमेम्बर एक भी सेशन आप लोग का ऐसा गया है कि मुझे आप लोग को कुछ बोलना ना पड़ा हो. Because of you all other students who are sincerely studying, they get distracted. Please understand. If you don't want to study, distract others, don't attend. Go and watch the recordings. This is what I can say you all. You're distracting others as well and even me. Cost control. Now because of budgetary control, आपके बजट आपने बनाए हैं, आप उसको अच्छे से कंट्रोल कर रहे हो. The business, the organization would be able to identify, address the budget कि कहाँ पे कॉस्ट को कट करना जरूरी है, कहाँ पे ओवर स्पेंडिंग हो रही है, इनएफिशिएंट स्पेंडिंग हो रही है, सो दैट यू कैन टेक प्रिवेंटिव एक्शंस. बट जब आप कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हो, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, दैट क्वालिटी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड. ओके. डिसीजन मेकिंग. Accurate budgeting information allows management to make informed decisions. बिकॉज आपने बजटिंग अच्छी की थी तो मैनेजमेंट को उससे हेल्प होगा डिसीजंस लेने में. लाइक यू कैन से रिगार्डिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपांशन. अगर कोई डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, सो व्हाट कॉस्ट कटिंग मेजर्स दे कैन टेक. ओके. एंड अकाउंटेबिलिटी. नाउ लेट्स से शिवम. शिवम is handling accounts department. Akriti is handling sales department. So if anything, sales team regarding the budget, if it is exceeding, I will not held liable Shivam, because accounts के लिए कौन responsible था? Akriti. So I will ask this Akriti कि क्या problem हुआ, क्यों आपका sales का budget exceed हुआ? Shivam is handling accounts department, so उनको सिर्फ उसी के बारे में accountability होगी. तो budgetary control क्या करेगा? आपको promote करेगा accountability within the organization. That is, individual departments are responsible for achieving their budget targets. Okay. So overall, you can say that budgetary control will provide you a framework, students, for financial management. It will help the organization achieve their financial objectives by monitoring, controlling the financial activities. Next, we are going to discuss about is the limitation. Now, when there are advantages, कुछ ना कुछ problems तो होगी ही कहीं ना कहीं. Now, what are the limitations? Even though it is an effective financial management tool, there are certain limitations that it has. First is inflexible. Yes, कोई budgets जैसे हमने पढ़े थे fixed budget, right? That we discussed, which is स्टैटिक, जहां पे आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते. तो बजट्स जो आप बनाते हो, दोज आर बेसिकली ऑन व्हाट योर अजम्पशंस, एस्टिमेट्स. एंड बिजनेस एनवायरनमेंट जो है ना, वो डायनामिक है, वो चेंज होता रहता है. सो ईच एंड एवरी बजट विल नॉट बी एबल टू अडेप्ट दैट फ्लेक्सिबिलिटी. सो ये जो रिजिडिटी है, स्टबर्ननेस है बजट का, it makes it challenging for them to adapt the unforeseen circumstances. Unrealistic assumptions. Budgets are often based on certain assumptions, sales growth, cost trends, market conditions. So if this assumptions जो आपने किए हैं, अगर वो गलत हो गए, unrealistic हो गए, तो आपका बजट तो irrelevant हो गया, impractical हो गया. लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपने अज्यूम किए थे कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, उसमें से कोई क्वेश्चंस ही नहीं आए. सो व्हाट इज दैट? यू आर एट लॉस.
सेम थिंग्स, बजट जो आप बनाते हो अजम्पशंस पे बनाते हो, प्रेडिक्शंस पे करते हो। अगर वो चीज नहीं हुई तो आपका बजट तो अनरियलिस्टिक हो गया, इनअक्यूरेट हो गया, राइट। ऑल्सो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं जिसमें कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है, लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशंस, उस टाइम पे बजट आपका अपसलीट हो सकता है अगर आपका अजम्पशन रॉन्ग निकल गया, बिकॉज आप क्या नहीं बोल सकते कि मार्केट में क्या ट्रेंड होने वाला है इन फ्यूचर। टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व preparing, monitoring budgets can be time consuming students. It could be costly because आप डेटा गैदर कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, कोऑर्डिनेट कर रहे हो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ, एंड देन यू प्रिपेयर द रिपोर्ट्स। तो ये सब चीजें स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए with limited resources is very costly. They feel it burdensome, pressure आता है उन पे, because they won't have the capacity to fulfill or to allocate sufficient time and personal to it. Overemphasizes on short-term results. Budgets typically focus on short-term results, that is quarterly, annually. So which helps you in monitoring performance, achieving immediate financial targets. सो ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा ये चीज ध्यान रखनी होगी जब आप शॉर्ट टर्म बजट बनाते हो, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और आपका जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स जो है वो सिंक में होना चाहिए, इट शुड गो हैंड इन हैंड। लैक ऑफ मोटिवेशन एंड ओनरशिप। नाउ इन सम केसेस व्हाट विल हैपन, एम्प्लॉइज में परसीव बजटरी कंट्रोल एज अ टॉप डाउन अप्रोच। वाई? बिकॉज आपके बॉस ने आपको बोला बजट फॉलो करने, आप कर रहे हो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग इट। जब कोई चीज आपको जबरदस्ती दी जाएगी तो इट इज लैकिंग मोटिवेशन स्टूडेंट्स, ओनरशिप, आप वहां पे अच्छे से काम नहीं करोगे। the employees do not feel personally invested into the budget, because अगर वो कोई suggestions भी देना चाहते हैं with respect to budgets, the managers are not in a position to hear that. So you will feel lack of ownership and motivation because कोई आपकी बात सुन ही नहीं रहा है. So you will work like as you're working, but not from the whole heart. Gaming and manipulation. Gaming and manipulation means budgetary control can create incentives for managers. अगर आपने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए, so you will get incentives, right? तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैनिपुलेशन कर सकते हो रिकॉर्ड्स में, so that you can get incentives. आप अपने रेवेन्यू को इन्फ्लेट कर सकते हो, बजट टारगेट को चेंज कर सकते हो, मैनिपुलेशन करना इन शॉर्ट आपके रिकॉर्ड्स. External factors and uncertainty, yes, as we discussed, unrealistic as well. कि budgetary control assumes a level of stability, predictability, but कोई चीजें जो है जो ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं है, like your market conditions, technology advancements, competitive pressures. So इसके वजह से आपके बजट में जो भी चेंजेस होगा, जो भी अनसर्टेनिटीज आएगी, that could be a challenge, right? So that is external factors and uncertainty. So it is very important, student, for the organization to recognize these limitations, supplement this budgetary control with other financial management tools. So how you can do that? Regular monitoring, flexibility in budgeting will help you to overcome these limitations, enhance the effectiveness of budgetary control. Okay. Next, we are going to discuss about is zero-based budgeting. Now, zero-based budgeting is that in which every expense in an organization
starts from new period, that is zero base. जैसे हमारे हर बजट में हम क्या करते हैं, प्रीवियस डेटा लेते हैं, उसके बेसिस पे फ्यूचर का डिसाइड करते हैं, बट जीरो बेस बजटिंग में आप पुराना कुछ भी कंसिडर नहीं करोगे. You will start everything with zero, assuming that you don't know anything. Let's take an example. A company normally allocates 1 lakh rupees for marketing on the last year budget. ठीक है, तो आप क्या करोगे, करंट ईयर में उसको 1,20,000 कर सकते हो. बट जब आप जीरो बेस बजटिंग यूज कर रहे हो, उस टाइम पे आपको पता है लास्ट ईयर का 1 लाख है, तो भी आप 1 लाख के बेसिस पे अजम्पशन नहीं करोगे. यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. मार्केटिंग टीम क्या करेगा, मार्केट में जाएगा, जस्टिफाई करेंगे एक्सपेंसेस, दैट इज एड कैंपेन्स का टोटल करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स देखेंगे, स्पॉन्सरशिप देखेंगे, will explain why those costs are essential for achieving the company's marketing goal. So if a particular activity like sponsoring event doesn't demonstrate value, उनको लगता है कि ये फायदे की चीज नहीं है, तो वो एलिमिनेट कर देंगे. तो यहाँ पे जीरो बेस बजटिंग में क्या हुआ, कंपनी ने पूरा रिसर्च वापस से किया, एंड देन दे डिसाइडेड द बजट, नॉट ऑन द अजम्पशन कि गए साल 1 लाख था तो ये साल भी हम 1 लाख रखेंगे या उससे ज्यादा रखेंगे. इट कुड बी मोर, इट कुड बी लेस, बट you have to do the justification. Okay. Some features of zero based budgeting. This topic is important. Okay. Starts from zero. That means each budget cycle begins with zero. All the department needs to justify students their financial needs without depending upon the prior budgets. पुराने बजट से हमें कोई लेना देना नहीं है. Justification of cost. Every line of item or activity in the budget must be justified. Department should provide proper sufficient details of all the expenses. Focus on priorities. Yes, resources are allocated here on the basis of necessity, priority, ensuring that they are spending with regards to the strategic goals, most important activities which are essential. And alternative evaluation. That means zero-based budgeting evaluates different alternatives leading to potential cost saving. Because आपको पता है पुराना खर्चा कितना है, तो भी आप उसको वापस से रिसर्च कर रहे हैं. So that is what alternatives आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो. Cost control and efficiency. When you scrutinize every expenses, zero-based budgeting helps you to eliminate unnecessary cost, promote more efficient use of resources. Because आपने दोबारा से रिसर्च किया, अगर आपको लग रहा है मार्केटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं तो आप उसको कट डाउन कर दो. ओके, so these are some of the features of zero-based budget. Next we have is your performance budgeting. Now what is performance budgeting? Performance budgeting मतलब यहाँ पे आप फोकस करोगे between the funds allocated and the results achieved. अभी आपके जो results आते हैं एग्जाम के, okay, what is that? Your result that you get, उसमें क्या होता है, आपका performance, correct? आपको क्या marks आए, out of what? Same thing happens in the business. Performance बजटिंग, आपने बजट पहले ही बना के रखा था, लेट्स से 1 लाख का बजट बनाया है फॉर सेल्स. अब आप परफॉर्मेंस के ऊपर सेल्स के एंड ऑफ द ईयर में देखोगे या मंथली जो आपने बजट बनाया है उसमें देखोगे कि सेल्स का खर्चा कितना हुआ. तो उसके बिहाफ पे आप उसको
एस्टिमेट करने की कोशिश करोगे, जज करोगे. So that is what you are deciding the performance on the basis of the budget that you have prepared. Okay, so that is your performance budget. Clear? I think trainer can unmute, give the chat box option to everyone now. If I get lots of chats, then again I'll disable it. Okay, so I think host can give it. Now, any doubts, students, with respect to the topic that we discussed, budgetary control, your limitation, benefits, zero-based budgeting? See, परफॉर्मेंस बजटिंग इज नथिंग बट जहां पे आप कंपनी के परफॉर्मेंस को इवोल्यूएट कर रहे हो, हर एक डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस को. सेल्स डिपार्टमेंट को मैंने टारगेट दिया था 1 लाख, दे हैव अचीव्ड एक्चुअली 80,000 ओनली. तो उन्होंने कॉस्ट बचाया कंपनी का, सो दैट इज गुड. अगर 1,20,000 खर्चा होता तो 20,000 क्यों खर्चा हुआ, दे नीड टू गिव द जस्टिफिकेशन. ओके, ओके. जीरो बेस्ड बजटिंग मींस, जीरो का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट. स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, ट्राई टू ब्रेक दिस वर्ड्स. जीरो मींस स्टार्टिंग. जो बजटिंग, अच्छा ठीक है, you have completed your MBA, you want to start a business, you don't have any backup of your parents, you have to start it independently. तो आप खुद ही रिसर्च करोगे, खुद ही एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई करोगे, कितने खर्चे हो सकते हैं मार्केट में. सो व्हाट इज दैट, जीरो बेस्ड बजटिंग. यू आर नॉट टेकिंग हेल्प ऑफ एनीवन एल्स. सो सेम वे, इवन दो आप बिजनेस आपका रन कर रहे हो फॉर इयर्स, आपने प्रीवियस ईयर का बजट बनाया है, बट यू आर नॉट कंसिडरिंग दैट बजट. एवरी मंथ यू विल प्रिपेयर अ न्यू बजट. आप खुद कैलकुलेशन करोगे, जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है उसे कट डाउन करोगे, एंड यू विल प्रिपेयर अ फ्रेश बजट. दैट इज जीरो बेस्ड बजट. आकृति, भरत, सौरभ, आई हैव एक्सप्लेन दिस जीरो बेस्ड नाउ. करंट बजट अनुकल्प इज दैट जो आपके करंट पीरियड के लिए है, दैट इज फॉर योर करंट ईयर. ओके, दैट इज आपके जो करंट पर्टिकुलर 12 मंथ्स होते हैं, उसमें आप क्या, कौन से डिपार्टमेंट के लिए क्या एलोकेशन करने वाले हो, दैट इज रिलेटेड विथ योर करंट बजट. Activity based budget is that where, depending upon the activities which are undergoing in the organization, you plan a budget. Like packaging activity hoti hai, then you have your branding activity, labeling activities. तो ये सब एक्टिविटीज को आप कुछ बजट अलॉट करते हो, सो दैट इज योर एक्टिविटी बेस्ड बजट. अनुकल्प, क्लियर? Long term budget range is 3 to 10 years. Avik, it depends upon company to company. You cannot quote any specific. Yes, because you are right. It is evaluated. मैंने आपको जीरो बेस्ड बजटिंग का एग्जांपल ऑलरेडी दिया कि एक कंपनी है जिन्होंने 1 लाख का मार्केटिंग का बजट बनाया था लास्ट ईयर, बट देन टू उन्होंने करंट ईयर का बजट बनाते वक्त वो 1 लाख कंसिडर नहीं किया ब्लाइंडली. उन्होंने वापस से फ्रेश बजट बनाया. कैसे बनाया, पूरे मार्केट में रिसर्च किया कि एड कैंपेन्स का कॉस्ट कितना है, स्पॉन्सरशिप का कॉस्ट कितना है, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के कॉस्ट कितने हैं. फिर उस बेसिस पे उनको लगा जो कॉस्ट आर नॉट एसेंशियल उन्होंने कट डाउन किया, एंड रिमेनिंग कॉस्ट के बेसिस पे उन्होंने नया बजट बनाया. दैट इज एन एग्जाम्पल.
Yes. Atul, what happened? Post it in the chat box. Atul, you can post your query in the chat box. Any more doubts, anyone? Those who have missed the previous session, you can watch the recordings. It would be uploaded. You can watch it. Atul, waiting for your chat. What happened? You had any doubt? Okay, so I think we have covered. Atul, this is what we covered in the starting budgetary control, the steps of budgetary control, benefits, limitations, zero-based budgeting, its features, and performance. And some topics were covered in the previous session. Kayur, you can post it in the chat box. बजटरी कंट्रोल अंजलि इज नथिंग बट इट इज दैट जहां पे आपने बजट बना लिया, बजट बना के आप ऐसे ही रख दोगे तो क्या फायदा है? उसे कंट्रोल करना, मॉनिटरिंग करने की भी जरूरत है, राइट? सो यू हैव टू कंट्रोल दैट बजट, यू हैव टू ओवरलुक। अगर आपका आपके क्लास में अगर लेट्स से आई हैव ओपन द चैट्स, आई हैव गिवन द ऑप्शन एवरीवन टू अनम्यूट योरसेल्फ, तो क्या मैं सेशन ले पाऊंगी? I won't be able because some people will continuously talk in the class. Same thing happens. There is somebody to monitor you all is required. Same thing happens in the business. अगर मैंने बजट बनाया है, वो बजट को मॉनिटर करना चाहिए कि whether that budget is going according to the situation what we have suggested. कुछ ज्यादा एक्सपेंस तो नहीं हो गया? अगर हो गया है तो कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं नेक्स्ट बजट में? तो ये सब चीजें आप जब ध्यान रखोगे, दैट इज योर बजटरी कंट्रोल के अंदर। क्लियर अंजलि? यस अनुकल, दोज आर डिफरेंट। एवरीथिंग, यस। तो सीम फाइनेंस विल बी रिस्पॉन्सिबल। अनुकल्प, yes, everything, each and every budgets are different. Any more doubts, question? Our unit 3 is completed over here. In the previous sessions, we had covered Atul, this is something that is not related with our topic, so I cannot that. The budgets that you are talking, that is not related with our syllabus, so I cannot because others will get confused. So we have total 5 units. Okay. So our unit 3 is completed. In the previous session, we are completed with the budgets. What are the essentials of budgeting? The objectives of budgeting, the different types of budget. And then we'd also discuss now about budgetary controls and zero-based and performance budget. So with this, your unit 3 gets completed. Okay. So any doubts, any questions that you all have? Arka Prava, you are asking me this question again. This is not covered in our sessions. Why are you asking this question to me? Whenever I will cover this topic, I will explain you the formula. As of now, I have not covered, so I'm not going to explain it because it will distract other students.
They will get confused what I'm talking about. Okay. So if the PPT is not available, call your support team and check with them. Okay, Krupali, function or subsidiary budget is that, see, in an organization, there are different departments that we have. सेल्स का अलग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन का होता है, एडवर्टाइजिंग का होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, सप्लाई चेन का होता है. सो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग बजट्स बनाते हैं. सो दैट इज द फंक्शनल और सब्सिडरी बजट्स. यस यस यू कैन, यस यू कैन. Exam pattern you will be coming to know from the support team as and how the notifications come. We will be discussing the short questions, long questions at the end of the last two sessions that we have. That time we will do all those. In this topic, there are no practicing of sums, so not required. Flexible budget Siley is that flexible मतलब क्या, change होना. तो जो budget depending upon the circumstances को आप change करते हैं, ठीक है, so that is your flexible. Siley, is it clear? Master budget is that in which all the budgets are incorporated into the one. अगर टॉप मैनेजमेंट को बजट को स्टडी करना है, एनालाइज करना है, तो क्या वो हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग बजट के पेपर देखेंगे, गो थ्रू करेंगे? नो. मास्टर बजट में सबके बारे में एक ही जगह पे लिखा रहेगा. सो दैट इज, you can say, a short description of all your budget plans that you have. फंक्शनल बजट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन डियर. फंक्शंस मतलब जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग. See, master budget, if it is inaccurate, it means your original budget is inaccurate. Simple as that. For assignment, you can talk to your support team. Gunjan, post your query in the chat box. What you want to know about this, Gunjan? Discontinuation of a product line. What you want to know about this? डिसकंटिन्यूएशन मतलब डिसकंटिन्यू करना एक प्रोडक्ट को. आप वो प्रोडक्ट आपका आइदर लॉस में जा रहा है या मार्केट में वो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स नहीं है. सो दैट इज द रीजन यू आर डिसकंटिन्यूइंग दैट. Tanmay, post your query in the chat box. See, students, I'm not assuring that the questions that I will tell will come in the exam. So if you will be telling me in that way, I won't discuss any questions. Kayur, it's not that what I give that will come in the exam, okay? You have to study everything. Otherwise, I won't give anything. Ab pura padho. It's just we are discussing. So you don't have to be like sure कि जो मैंने दिया वही आने वाला है. No, no, there is no need of sums for this particular unit. Okay, fine. So thank you, students, for attending today's session. We'll meet in the next session.
Thank you. Have a great day. Take care. Recording stopped. Thank you, ma'am. Thank you.